Hello guys, how are you? Today we are going to start our geography domain for CUET 2023. This is the first lecture regarding the geography domain, and this lecture and the series is all about the geography domain and not the general test. So please don't confuse yourself. Okay, so let's start. And yeah, I want to tell you something. Please subscribe the channel as this series is going to be like little bit lengthy. I'll make around 5 to 6 videos for the coverage of the syllabus. So I hope you stay connected for the further videos. This is the first lecture. So let's start. What are we going to cover in this series? We are going to cover the basics, first thing. Second thing, the new terms of the human geography. And third thing, concept of NCERT. As I already told you, that CUET website itself mentions clearly that the syllabus for the geography domain is the basic of the NCERT. And which one? Class 12th. Okay. So the whole story of the geography domain revolves around the NCERT of the 12th class, basics of the human geography. Okay. So let's start. Firstly, I would like to introduce you with some definitions given by the geographers. The very first definition is given by the Radzil. The definition is about the human geography. And as I already told you, we are discussing human geography. The whole story of the CUET Class 12th NCERT revolves around the human geography. So obviously, we are going to study human geography in very depth. Okay, so the first definition given by the Radzil is about the human geography. And what is human geography? Human geography is the synthetic study of relationship between human societies and the earth surface. Okay, here you have to notice this. Why am I highlighting this particular term, synthetic? मैं क्यों इसे highlight कर रहा हूँ? I am highlighting this term because this term is very important, and this term is about the synthesis. Synthesis. What is synthesis? Synthesis is like you are taking few examples from the few different thing and you are combining them, okay, to get the results. That's what synthesis means. So who emphasized the term synthesis? It was Ratzel. Okay, आइए चलते हैं सेकंड डेफिनेशन पे. ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ. ये डेफिनेशन दिया था सिंपल ने. Now, what is the term which I should highlight? It is this, changing relationship. I am highlighting this because sample emphasized dynamism. Dynamism. Dynamism is the term. Okay. Because you can see the relationship is changing, man is changing, I mean, at unrest, as well as the earth is also unstable. So, sample emphasizes the term dynamics or dynamism. That's what is like, it should be highlighted here, changing relationship. So, that's how we move to a third definition given by Vidal. Okay, he was German geographer. What definition he gave? Let us see. Conception resulting from a synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it. So this definition talks about the physical laws governing. Okay. Somehow this definition emphasizes changing environment and the laws and the geography. So we have to conclude one thing from here. That's regional analysis. Exactly. Regional analysis was focused by Vidal in his definition. Because as regions on the earth changes, जब earth पे जो भी regions हैं वो change होते हैं. For example, if you are like at one moment you are near equator, at particular second moment you go to near like a tropic of Cancer, and the very next moment you are moving towards the poles. You can see that the environment, the geography, each and everything changes. So that's what is being highlighted in this definition given by Vidal. So I'm going to tell you about the environmental determinism. Environmental determinism क्या है? What is environmental determinism? Determinism as in geography is having multiple schools. And what
does the term schools means? School means there are multiple thoughts. There are multiple thoughts and multiple theories. Multiple theories. And what do these theories signify? There are many supporters of these theories, many supporters, but if as you can know, अगर सपोर्टर होंगे तो अपोज करने वाले भी होंगे. सो अपोजिशन इज ऑल्सो देयर. यहाँ पे भी अपोजिशन होती है. ओके, इट्स नॉट लाइक लिमिटेड टू द पार्लियामेंट. तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज, इट इज अ स्कूल एज इन थॉट. कोई भी थ्योरी होती है उसे काफी लोग सपोर्ट करते हैं, और वो लोग जो हैं, जो उन लोगों का जो सपोर्टर्स का जो ग्रुप है, दैट्स व्हाट इज स्कूल. तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी अपने आप में एक स्कूल है. आइए, लेट्स डिस्कस द nitty-gritties ऑफ दीज schools. तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हमें क्या बताता है? ये स्कूल हमें बताता है कि पीपल आर फॉलोइंग द नेचर्स लॉज, नेचुरल लॉज. ओके. सेकेंड थिंग, दे आर फॉलोइंग द डिक्टेट्स ऑफ द नेचर. एंड हाउ? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में ये चीज कही गई है कि नेचर डिक्टेट्स ईच एंड एवरीथिंग. एंड हाउ? ऑब्वियस सी बात है, वी कैन नॉट लिव ऑन पोल्स. इट्स वेरी हार्ड टू लिव ऑन द पोल्स बिकॉज द क्लाइमेट इज वेरी हार्श. तो ये क्या है? ये डिक्टेट है किसका? मदर नेचर का. इट्स अ डिक्टेट ऑफ द मदर नेचर. देन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में मदर नेचर क्यों कहा गया है? बिकॉज मदर नेचर fulfills the necessity of the humans. Okay, that's why we call the mother, I mean nature, as mother, because the necessities and the needs of the humans were fulfilled by the nature, like a mother. That's why mother nature. And what is the last feature of the environmental determinism? It's naturalization of the humans. Why naturalization? Because in each and every aspect of humans, nature has to be considered. Okay. आप जो है, you cannot live on poles. Okay, you cannot cultivate rice in deserts. That's what. आपको नेचर के लॉज सारे फॉलो करने पड़ेंगे. एंड बेसिकली नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस इज लाइक टू स्टे कनेक्टेड, with nature, like our tribal people, tribal cultures. Tribal cultures are obviously naturalized. They are highly and heavily connected to the nature. That's what naturalization means. And naturalization also means like your living, your fooding, each and every necessity is being fulfilled by the nature, and you have to stay connected with the nature for each and everything. That's what is naturalization here. So let's move on the next school. That's possibilism. Okay, so we saw determinism. Determinism, what we saw, nature dictates us. We call mother nature because nature is fulfilling our each and every necessity. Okay, and we have to follow the laws of the nature. That's what we learned in environmental determinism. But what is possibilism? Human beings got some better education, and that's how they evolved with some efficient and better technology. Okay, there were possibilities. Okay, we can see that today, at least today in 21st century, I can say that apples can be cultivated even in the equatorial areas, and that's what is happening. If you can see lab meat, another example. So that's how you understand this term possibilism. So possibilities are always there. We can do each and everything. If nature is not supporting us, that's okay. We will develop the technology, and that's how possibilities, many and more possibilities evolve. Okay. Then humanization of nature. How? Like infrastructure. Okay. What else? Cultivation. Even if it's not possible, if you see, I already told you, in Saudi Arabia, cultivation is being possible. How? How? It's because humanization of nature. What does it mean? If nature is not allowing us to do anything, we will use the technologies to make it possible. That's what is humanization. So this was possibilism. So what was the difference between determinism and possibilism? I'll summarize for you. In determinism, environment determines our each and every action. We have to follow the laws of the nature as well as we have to be bound by the nature.
But in possibilism, that's what is not true. In possibilism, we are having ample of possibilities. Okay, then we are having technologies. Okay, and that's how we when we are having possible technologies and that's how we are having possibilities. We can humanize the nature, even if the nature is not allowing us. We can do many things. For example, you can take gravity was the law of the nature, but humans defied it. How? Rocket science. By rocket science. Yeah, exactly. That's what is possibilism. Okay. So let's move on to the next school. That's what is like neo-determinism. Neo-determinism क्या है? अब आपने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ लिया, पॉसिबिलिज्म पढ़ लिया, नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। नियो डिटर्मिनिज्म जो दिया, वो दिया ग्रिफिथ टाइलर ने। ग्रिफिथ टाइलर ने क्या कहा कि नियो डिटर्मिनिज्म इज अ मिडिल पाथ। मिडिल पाथ किसका? मिडिल पाथ ऑफ डिटर्मिनिज्म एज वेल एज पॉसिबिलिज्म। या एग्जैक्टली, इसका डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म का। और what was the other term used for neo-determinism? Stop and go determinism, like the traffic signals in the cities. Exactly. So, इसका मतलब क्या था, इसका क्या मतलब है वो हम जानते हैं। ग्रिफिथ टाइलर ने ये कहा कि एक मिडिल पाथ होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ मिडिल पाथ। हम हमेशा ये नहीं बोल सकते, वी कैनॉट ऑलवेज फॉलो दैट पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर एंड वी कैन डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर every possible thing, like everything which is impossible and made impossible by the sorry, laws of the nature. तो इन्होंने कहा, ग्रिफिथ टेलर ने, कि नियो डिटर्मिनिज्म मींस we have possibilities, we will be able to develop the technologies, but not beyond the limits of the not beyond the limits of the nature. यही मतलब है नियो डिटर्मिनिज्म का, नॉट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द नेचर। और यहाँ से बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकल के आता है आपका ग्लोबल वार्मिंग का। इसका ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग क्या है my friends? Global warming is basically when humans explored many possibilities and they exceeded, literally they exceeded the limits of the nature. What was the end result? Global warming. That's what I'm trying to clear. कि होता क्या है नियो डिटर्मिनिज्म? नियो डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि देयर आर ऑलवेज सम लिमिट्स ऑफ द नेचर एंड वी हैव टू फॉलो इट। इफ वी आर एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज एंड वी इफ वी आर नॉट फॉलोइंग द लिमिट्स ऑफ द नेचर, इट कैन बैकफायर, क्योंकि लिमिट्स होती है नेचर की और हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट इज नियो डिटर्मिनिज्म। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो जैसे अगर हम इफ वी आर नॉट फॉलोइंग द रेड लाइट, इफ वी आर नॉट स्टॉपिंग ऑन द सिग्नल, क्या होता है? एक्सीडेंट। एग्जैक्टली। तो दैट्स व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, एक एक्सीडेंट है, बिकॉज ह्यूमंस आर नॉट फॉलोइंग द लिमिट्स ऑफ द नेचर। कैसे? एमिशंस, CO2 और बहुत सारी चीजें। So let's move on to our next slide. अब इसके बाद we are going to study about the different schools of which originated out of the subject human geography. Okay, so we discussed neo-determinism, we discussed possibilism, and we discussed environmental determinism. अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट्स which evolved out of human geography as a subject. Okay, इनको ब्रांचेस भी कह सकते हैं। तो पहली चीज आती है यहाँ पे, द फर्स्ट स्कूल इज वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। वेलफेयर मींस किसका वेलफेयर? ऑब्वियसली ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमंस का वेलफेयर। ओके, सो वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। सेकंड थिंग, ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए क्या क्या चीजें होती हैं बताइए? एजुकेशन, एग्जैक्टली। इसके बाद एजुकेशन के बाद हेल्थ, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारी चीजें ये सारी चीजें आती है वेलफेयर स्कूल में। नेक्स्ट आता है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये क्या है? ये है मार्क्सियन थ्योरी पे बेस्ड। अब एज आप सभी लोग जानते हैं, मार्क्सियन मींस सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑब्वियसली एंड थ्योरीज।
यहाँ पे ओवर पावर करती है। तो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि जब भी कैपिटलिज्म आता है, whenever capitalism is powerful, whenever capitalism is powerful, end result क्या होते हैं? End result is exploitation of the proletariat, exploitation of लेबर क्लास या फिर पुअर, आप सीधे सीधे कह सकते हैं। ठीक है, ये है आपका रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट स्कूल पे आते हैं, बिहेवियरल स्कूल। इट्स साइकोलॉजी अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमंस, दैट्स इट। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इट्स ऑलरेडी, ये साइकोलॉजी को डिफाइन करता है। बिहेवियरल स्कूल के कैसे ह्यूमंस बिहेव करते हैं, व्हाट इज देयर साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज, वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइमलाइन। पहले, सबसे पहले फर्स्टली रीजनल एनालिसिस डेवलप होता है, देन एरियल डिफरेंशिएशन आता है, देन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन आता है, एंड देन इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक एंड मेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स, जो हमने अभी डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में। रीजनल एनालिसिस इज एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट रीजन्स। एज यू नो, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर आप इक्वेटर के पास जाएंगे तो चीजें बहुत अलग होंगी, ट्रॉपिक्स के पास जाएंगे तो अलग होंगी, पोल्स के पास जाएंगे तो अलग होंगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ रीजनल एनालिसिस मैटर्स फॉर अस। ठीक है, देन आता है एरियल डिफरेंशिएशन, हाउ एरियाज आर डिफरेंट। आप अलग अलग एरियाज की एनालिसिस करते हैं और उनके डिफरेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, दैट्स व्हाट इज एरियल डिफरेंशिएशन। देन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशल बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस, दैट्स इट। हाउ डिफरेंट प्लेसेस आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद their differences। आइए नेक्स्ट हम लास्ट इसको देखते हैं, ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। यहाँ पे हम फील्ड्स की बात करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द फील्ड्स ऑफ द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहले आता है सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में बिहेवियरल ज्योग्राफी, एज ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स अबाउट द साइकोलॉजी। देन आता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स बेसिकली। ठीक है, देन आता है ज्योग्राफी ऑफ लेजर, देन कल्चरल, ठीक है, हिस्टोरिकल। इतने इंपॉर्टेंट हैं, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिलेंगी, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग, टूरिज्म एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए इंटरनेशनल ट्रेड, देन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेज। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे। आप अगर ज्योग्राफी डोमेन के लिए जा रहे हैं तो इनकी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज? Geography of resources is about the resources of the earth, the minerals, the metals, the petroleum। बहुत सारी चीजें होती हैं जो रिसोर्सेज में आती हैं, इन सब के बारे में। इनका फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेसिस, इनका ओरिजिन। ठीक है, इनका ओरिजिन, कहाँ कहाँ पे इनकी माइनिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पेट्रोलियम के जो रिजर्व्स हैं वो कुवैत में है, सऊदी में है। तो ये सारी आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, हाउ डिफरेंट कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट क्रॉप्स। ठीक है, इन द डिफरेंट क्लाइमेट। ये आपका सब कुछ आएगा ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर में, कौन सी क्रॉप्स कहाँ के लिए सूटेबल हैं, कहाँ के लिए नहीं है, दैट्स व्हाट मेक्स इट ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर। देन आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज इज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड, एंड आई मीन कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है किसी भी इंडस्ट्री से। मैक्सिमम आउटपुट, आई मीन यहाँ पे वो वाला आउटपुट नहीं होगा। मैक्सिमम आउटपुट एज इन कि आप रॉ मटेरियल्स, मार्केट और इंडस्ट्रियल लोकेशन, रॉ मटेरियल, मार्केट और इंडस्ट्रियल लोकेशन को किस तरीके से सिंक इन करोगे। सिंक इन एज इन के, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर इंडस्ट्री से मार्केट बहुत ज्यादा दूर है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, या फिर मतलब कहना चाहिए कि आपका जो फिनिश गुड है उसका एक्सपेंस बहुत बढ़ जाएगा। और अगर रॉ मटेरियल बहुत दूर से आता है आपका इंडस्ट्री से, आई मीन इंडस्ट्री बहुत दूर है रॉ मटेरियल का, जहाँ पर भी कोई मार्केट है या कोई मतलब सोर्स है, तो वहां से अगर आपका रॉ मटेरियल आने के लिए इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो आपका रॉ मटेरियल का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा होगा। तो आपको ये सिंक इन करना होता है ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज में कि रॉ मटेरियल और मार्केट, आपको दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका जो फिनिश गुड है वो मार्केट में सेल होगा और आपका जो फिनिश गुड बनाने के लिए चीजें चाहिए वो रॉ मटेरियल से बनेगी। तो आपका इंडस्ट्री का लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों चीजों के लिए आपको परेशान ना होना पड़े। आपकी रॉ मटेरियल आपको एक्सेसिबिलिटी जो है बहुत इजीली एक्सेसिबल हो, और मार्केट जो फिनिश गुड है वो बहुत इजीली मार्केट तक पहुंचाया जा सके। ठीक है,
और लास्ट आता है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसमें आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी आ जाती है। ठीक है, आप डब्ल्यूटीओ के बारे में भी थोड़ा सा इसमें जानने को मिलता है, और ये सारी चीजें, हालांकि आपको इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा फिलहाल के लिए, बट हाँ डब्ल्यूटीओ जो है, और कुछ इम्पोर्टेंट आपके जो है ट्रेड के पॉलिसीज हैं, कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। पॉलिसीज हैं आपकी, फिर कुछ इंपॉर्टेंट आपकी कंट्रीज के कोलैबोरेशंस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा डिटर्मिनिज्म के बारे में, पॉसिबिलिज्म के बारे में, और हमने डिफरेंट स्कूल्स के बारे में पढ़ा। ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट में कौन कौन से डिफरेंट स्कूल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जुड़े रहिएगा। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर तक आप ये चीज ध्यान रखें कि मैं आपको बताने जाऊंगा जो चीजें हैं वो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, तो आपको इनको एक बार रिवाइज करना है, और हो सके तो एनसीईआरटी आपको ठीक से रिवाइज करनी है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस वहीं से पुट अप होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरल टेस्ट के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ये सोचकर नहीं बैठेंगे कि जनरल टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, क्योंकि ज्योग्राफी डोमेन का सिलेबस अलग है और जनरल टेस्ट का सिलेबस थोड़ा सा वैरी करता है। ठीक है, तो जनरल टेस्ट के लिए आप इन वाले वीडियोस को ना देखें, उसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।